Okay, Assalamu alaikum dosto. This is Jay's Tech and Travel YouTube channel by Loyal Tech and Security. आज हम CompTIA A plus Part 2 का Chapter 14 कंटिन्यू करेंगे. um, इससे पहले हमने up to 13 फिनिश कर चुके हैं. If you like the videos and if you have any questions, just submit those in the comments or in the chat session. Um, and any suggestions or any requests you have for the new videos, let me know. Make sure to like and subscribe and bell notification का icon दबाना मत भूलिएगा तो you are notified for all new videos. तो चले, let's see, we will start chapter number 14, which is operating system administration. मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हम कवर करेंगे और हाउ टू एडमिनिस्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम. These are the few things we will be covering. Compare and contrast various features and requirements of Microsoft operating system. Windows Vista and 7 हम कवर नहीं करेंगे. Windows 8 and possibly 10 हम कवर करेंगे. Given a scenario, install Windows PC operating system using appropriate method. इस training के बाद I will see if I can show you how to create a virtual machine and how to install an operating system on a virtual machine. ठीक है? Then, given a scenario, apply appropriate Microsoft command line tools. पहले मैंने आपको थोड़ी बहुत कमांड लाइंस बताई थी. आज हम थोड़ी और इन डेप्थ कमांड लाइन को भी कवर करेंगे. Use appropriate Microsoft operating system features and tools, use control panel utilities, and perform common preventive maintenance procedures using the appropriate Windows OS tools. ठीक है? So we are going to be covering that. Now, control panel. ये control panel क्या है? How do we use it? How to maneuver through control panel? So आप start का बटन दबाएंगे and then you're gonna type in control panel and you will see this window. अगर आप first time control panel खोल रहे हैं, so your control panel is gonna look something like this. Okay, this is a condensed view which you can switch it to classic view if you like. How to do that? You go to view by and you can click large icons or small icons. They're same, but the small or large is the difference. But the icons आप देखेंगे वो same ही दिखेंगे आपको. And this is just small. ठीक है? I prefer large so I can see it clearly. But anyway, so this is how you change the control panel view. And control panel के अंदर जो main जो applications which they call applets, they run in control panel. Now, कंट्रोल पैनल के अंदर यू कैन ऐड अ डिवाइस. अगर कोई नई हार्डवेयर आपको ऐड करनी हो, यू कैन रन इट थ्रू कंट्रोल पैनल. प्रोग्राम एंड फीचर्स, ये एक ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में विच एड्स, डिलीट्स, चेंजेस एनी सॉफ्टवेयर यू हैव. एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो है परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स ऑन द कंप्यूटर. डेट एंड टाइम का दूसरा आइकॉन है applet, which basically configures the date, time, and the time zones and things like that. Display or the personalization app or the icon, which configures screensavers, colors, display options, and monitor drivers. Folder option have fonts and all the other things we are going to see live in here. So again, this is your control panel. ठीक है, डेट एंड टाइम ये आ गई. ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का सेक्शन आ गया. ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का आ गया. ऑब्वियसली देयर आर मोर ऑप्शंस हियर. यू कैन सी program and features. This is one of the feature you will probably use quite a bit, especially अगर आप help desk में काम कर रहे हैं. You will be using this a lot. ये जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है, it shows you that.
अगर आपको uninstall करने हैं, you can do it from here. Just click uninstall, and it will remove the software from your computer. So anyway, so this is all your programs and features. You can uninstall your programs from here. Whatever you want to uninstall, you click on that and then click uninstall. A pop-up will appear. Just follow those steps and then you can uninstall it. So this is control panel. ठीक है? Set the format used for numbers with the options in the region. ये Windows 10 के अंदर has been changed a little bit. यहाँ पे they are showing you how to change the format, which is the date, long date, short time, long time, day, and the examples or the preview. Windows 10 के अंदर, let me show you how that's done. You're gonna type in start region. वो region की settings देखें ऊपर खुद ही highlight हो गई है. You enter that, and अब वो settings के अंदर show करता है. So first of all, region, जो भी आपका region हो, you select that, and this is the format. Current date is set up as. You want to change it, you click on this. As you can see, ये वाली screen looks different than what they have here. ये जो पीछे है. But again, this is for Windows 7 and 8. We are on Windows 10, so it looks different. आप अपना calendar change कर सकते हैं. First day of the week. No one really changes these as much other than maybe just the short date आपको कैसे लिखनी है. I guess in other countries, especially in Asian countries, date comes first and then the month, so you might want to change that. Yeah, in North America, the month comes first and then the date. Okay. And then the time, long time and short time, if you want to change that, that falls under settings. Remember, ये दो अलग-अलग Windows 10 के अंदर इन्होंने कंट्रोल पैनल को और सेटिंग्स को अलग कर दिया है. कंट्रोल पैनल इन्होंने बहुत कोशिश की कि कंट्रोल पैनल कम्प्लीटली ख़त्म कर दें, बट फ्रॉम ए मैनेजमेंट परस्पेक्टिव they cannot eliminate control panel because उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं which you need from day to day business. So that comes to the settings option in Windows 10. Let me quickly see if I have Windows 8 running here as well, so let me see if we can pull up some information on that. Okay, ये है Windows 8.1 Professional, as you can see in the bottom. When I click on the start, आप देख रहे हैं ये इसका start menu है. ये मैंने ख़ास इस क्लास के लिए इंस्टॉल किया था to show you how Windows 8 works. Mouse scroll करते हैं, then you get these apps or the big icons to directly go into the app, and then desktop पे जा सकते हैं. One thing हमें जाना था control panel में, so let's see. Click on start and you just start typing. यहाँ पे भी वही होगा जो Windows 10 में होता है. ये देखें control panel. Here, control panel, then you just click on that and it opens up like this. यहाँ पे you can change date and time. No, that's not it. Hold on. Region. There you go. Region right here. हाँ तो देखा इसके अंदर exactly what उन्होंने show किया था, it shows just like that. Okay. So anyway, that's Windows 8.1. Okay, moving forward. Give me 1 minute. अच्छा, और यहाँ पे फिर ये लोग बता रहे हैं कस्टमाइज फॉर्मेट. Additional settings में अगर हम जाएंगे in that same menu, you can customize these options. Region के through ही आप जा सकते हैं. I don't want to go much into it. You can check this on your own. System applets. System applets जो है, it's basically Microsoft जो है, which allows you to install only drivers that have been checked, meaning signed,
by Microsoft to minimize the risk of malicious softwares being installed on your computer. Your system applets, part of it does that job, which may say network identification. Device manager is the one which you use to check what's installed on your system in terms of hardware. फिर hardware का section है user profile. As we go further, we will discuss that more. All of these options you see in here, they're accessible through my computers or control panel. OS command line, which is command prompt in Windows. Starting with task skill. Task skill जो है is a utility used to terminate processes. Processes meaning कि कोई application आपकी run कर रही है, and if you want to close that or terminate that application, you आप command prompt में आके भी task kill कर सकते हैं and it will close that application. Remember, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप कंप्यूटर आपका जो GUI है OS के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर वो available नहीं है, even then you can control the entire Windows or any other operating system through command line. And ये वो है command line की commands which lets you do multiple functions. Next is boot rack. It's a tool. You run the tool from installation disk. It fixes boot, writes new sector, fixes MBR, which is write and builds new record. So ये जो boot rack है, basically जो CD होती है, आप उससे run करते हैं. At the time of installation is installing a Windows, that is when you run that. Shutdown command is another utility जो आप command prompt में डालें. You type in shutdown //f, it will force shutdown and आपका computer shutdown हो जाएगा. Task list is another utility which is used at command line to see a list of all running running processes. Let me see if we can type some of these commands. And ये है task list. आप देख रहे हैं कितनी सारी है. ये अभी इस कंप्यूटर के ऊपर सारी चीज़ें रन कर रही हैं. सही है. और ये जो PID है, you have to keep in mind, PID is process ID. In order for you to kill or terminate any of these services, you need this process ID. So for example, आप ये पूरा नाम नहीं टाइप करेंगे. आप to kill it, you're gonna type in 101048 and it will kill this process ID. ठीक है. Then we have MD, RD, and CD. MD is make directory, RD is remove directory, and CD is change directory. ये सब commands आप I would highly recommend कि आप लोग remember करें because आपको day to day life के अंदर बहुत ही काम आएगी. So for example, first हम करते हैं make. Let's see, dir करेंगे तो आपको directory show करेगा. So I don't wanna, well actually I can create in here. So I can do mkdir actually, make directory, name test, enter. mkdir space test मैंने डाला तो अब ये देखें test की डायरेक्टरी बन गई. dir means directory. Okay, next command है rd which is remove. So you can either do rm directory, remove directory, what was it, test. ये case sensitive होता है. And there you go. अगर मैं I think मैं Linux is very case sensitive. Command prompt का I'm not 100%, but usually command line is case sensitive, meaning अगर ये T जो है test का अगर मैं capital में नहीं लिखता हूँ तो वो recognize नहीं करेगा. Usually command line is very case sensitive. Command prompt का I'm not 100%. But anyway, अभी मैं इसमें जाऊँगा, देखें वो directory remove हो गई है यहाँ से. ठीक है. CD is change directory. अभी मैं कौन सी directory में हूँ, ये जाली के अंदर हूँ. यहाँ से मुझे निकलना हो तो I can do CD space or just dot, it will change the directory, or I can do CD // and it will change the directory to the home directory, which is home in this sense is a C drive.
पर मुझे सिर्फ एक मुझे खाली जाली से निकल के यूज़र में जाना हो, so this is what I will do. First, I'm gonna go back into the Jali. So let's do cd users Jali. Okay, तो मैं वापस जाली के अंदर आ गया हूँ. ठीक है, अभी मुझे सिर्फ एक डायरेक्टरी पीछे जानी हो, so I can do cd डॉट डॉट. तो देखें पहले जाली में था, अब यूजर्स में आ गया. तो एक डायरेक्टरी पीछे जानी हो, so I'm gonna use डॉट डॉट. But if I want to go to the main prompt, which is a C, I can just do C forward slash और वो मुझे main के ऊपर ले आएगा. So these are like very minor commands which you should know about. फिर next आती है अपनी command is a format command. Delete is the same as remove, but you can do delete for the executable file as well. Format command is used to wipe data off disks and prepare them for new use. अब format जो है, I cannot do format, it's gonna remove everything, but let's say if I wanted to do format. तो सबसे पहले I wanna change the drive, not the directory, I wanna change the drive. What do I mean by drive? ये जो आप C देख रहे हैं ना, ये C, it's a drive. Let's see if it shows me disk drive. नहीं, disk. Hold on, there is a command. I don't remember that. Hold on. नहीं पता हो, you can always do help. And let's see. Disk part. I think that's the one. Disk part जो है basically it's gonna just it opens up another disk part, which I don't want to do that. So anyway, so next directory I already know it's D. तो मुझे D में जाना हो, I can't just type cd D. It's not gonna do anything. मुझे cd D colon type करूँगा, it's gonna go in D drive. Sorry, why didn't go in D drive? Oh, शायद इसके ऊपर D drive है ही नहीं. Hold on. नहीं cd D है तो सही. जा Oh, I think it's because it's not opened up as an admin. Hold on. So that's one thing you want to make sure when you open up command prompt, add as an admin, run as an admin. Yeah, it should. Yeah, I'm not sure why it's not going in, but anyway. So we're gonna move on to the next one at this point. Let's see what else we got. Format, copy. So copy command obviously does what it says. It makes a copy of a file in a second location and copies files only. Okay, not the folder. Folder के अंदर जो file होगी, it will copy that. Xcopy is designed to copy directories as well as files. Xcopy अगर आप use करेंगे, then you can copy folders as well as files. Robocopy, इसमें तीन option है copy के. Robocopy is a utility, robust file copy for Windows, is included with the recent version of Windows and has the big advantage of being able to accept the plethora of specifications and keep NTFS permissions intact in its operations. So Robocopy जो है is a little bit more advanced feature after in these recent Windows जो है वो allow करता है आपको directories as well as files को copy करने का, और जो उसका जो NTFS का जो partition है ना, it does not make any changes into that. Disk part जो मैंने अभी use करने की कोशिश की थी is a utility, shows the partitions and lets you manage them on the computer's hard drive. So this is actually the command, but the thing is जो मैंने अभी run की थी वो
आपको कमांड लाइन में नहीं शो कर रहा है, बट इट शोज यू इन, इट ओपन्स अप, नो, yeah, see it is, oh yeah, मैं admin में नहीं था ना, इसलिए it was not showing that before. So let's see, now I'm in disk part. I wanna see list, yep. हाँ, ये रहा list disk. List disk basically shows you the disk online, कितनी GB की disk लगी हुई है, and it shows you. So this is what disk part does, but the disk part जो है, आप you can manage your entire hard drive from here. And this is on the command line. The same thing you can do in Windows. Let me show you differently. Is by going to this PC, click on manage. No, there has to be, yep, this is it. Manage, and then यहाँ पे आपको दिखेगा disk management. So ये जो disk management है, you can manage what you can do here. They can remove, repair, rescan, shrink. All of this is what you can do here. यहाँ पे देखें ये shrink है ना, shrink का volume, extend, format, delete, you can do all that here. So ये GUI हो गया और ये हो गया command line. ठीक है? That's the difference. Okay, next है अपना SFC. SFC is actually a scan feature. They're not talking about that much, but let me see. It's a scan feature. You can do SFC slash scan now, तो आपका system scan होना शुरू हो जाएगा. Same thing आप Windows में GUI में भी कर सकते हैं. There's different options to do that. Check disk, basically chk disk. आप type करेंगे, it will ask you to check the disk. It will take some time, but you know eventually we'll do that. But see यहाँ पे तो थोड़ा time ले लेगा. So let me see if I can skip it. Control C, so you can just close everything, but again it will check your disk. Acha, quickly I want to show you I'm just gonna show you the command to do the task kill. I'm not actually going to kill a task. So your task list hai. So for example, I want to pick something. Cannot shut this one down. Well, technically I can't shut it. I'm not supposed to shut anything down, but ये उसकी command है. Task kill / PID, ऐसे मैंने बताया था आपको, process ID space और जो भी ID यहाँ से आपको बंद करनी हो. So let's say command prompt, so 1464. I hit enter and it should close it. Cannot do that right now because it's gonna kill our sessions. So this is the command. ठीक है? GP update, GP result जो है ये अगर domain computer joined हो, you can use in there like GP update. यहाँ पे कुछ होगा नहीं. GP update, it will just update something, but nothing is really gonna happen. GP update का मतलब है group policy update. जब हम when our computer is part of the domain network, that is when you do GP update. वो domain से अंदर वो update होता है. dir मैंने आपको बताया दिया, it shows a directory. Exit से मैंने अभी show किया, I was in disk part and मैंने exit लिखा तो वो disk part से निकल गया.
कोई command आपको ना पता हो, you can just do help and it will give you the entire list, and then you can just go off of that. Extract just extracts more data, and then the slash mark is just for help as well. Any command you write, CLS question mark or CLS question mark आपको बताता है कि कमांड करेगी क्या. फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क, फॉर एग्जांपल डिस्क पार्ट क्या करती है, ये भाई ये करती है. डिस्क पार्ट ये वर्जन है, ये करती है, उसकी डिस्क्रिप्शन देता है बेसिकली. सो फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क डज दैट. फिर विंडोज 8.1 के अंदर बता रहा है कि हाउ कैन यू ओपन अप कमांड प्रॉम्प्ट. क्विकली लेट्स टेक अ लुक, बिकॉज हमारे पास विंडोज 8 है. So we're gonna close that, close this. There's so many ways you can do this. There's not just a single way, but Windows 8, you right click on this and then you see command prompt admin and command prompt without admin. So you just click on that, it will open up command prompt right here. That's one way of doing it. Another way is just start and type in control, no sorry, not control panel, CMD. वो रहा ऊपर आ गया ना command prompt, and you can just open it that way too. Okay, चलें, let's go back to desktop. Windows registry, what is that? Windows configuration information is stored in a special configuration database known as the registry. This centralized database contains environmental settings for various Windows programs. The registry is broken down into a series of separate areas called hives, like age key current user. Windows registry is a very critical area of any Windows operating system. Windows registry के अंदर if you make even a change, an incorrect change, let me say that, अगर आप एक incorrect change भी उसके अंदर कर देंगे, your Windows will have some problem. How do you get to that? Let me see if they cover that in the. Okay, let's restoring the registry. Okay, so quickly, multiple ways to do this. Again, आप start में जाके you can type in reg edit, ये registry editor आ गया ऊपर. Another thing you can do, आप Windows plus R का बटन दबाएंगे तो ये run आ जाएगा. You can just type in registry dot I think MSC. No, registry.exe, I think. Hold on, I don't remember. Anyway, so this is the registry they're talking about. You do not want to mess with this. You should only make changes if you know what you're doing. Age key current user common है Microsoft Windows. इसके अंदर basically Windows की सारी चीज़ें रखी हुई हैं. Anything you change in this, it's nothing, like you see, it's only binary. This is machine language. आप इसमें से कुछ भी change करेंगे, your system is messed up. ये खाली value data आप change कर दें यहाँ पे, if you don't know what you're doing, वो आपका system ख़राब हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसी तरह से I want to show you, see networking, you can go for that. So इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. The entire विंडोज़ की जो मेन एंट्रीज हैं वो इस रजिस्ट्री के अंदर होती है. ठीक है, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिस्टम रीस्टोर पॉइंट्स क्या होते हैं. तो जब हम सिस्टम को रीस्टोर करते हैं, ये रजिस्ट्री भी उसके साथ प्रीवियस वाली जो कॉन्फ़िगरेशन में होती है वो रीस्टोर हो जाती है. दैट इज़ व्हाट द स्टोरिंग रजिस्ट्री मीन, restoring registry. So system restore will restore the registry to the state it was in when a restore point was saved. Last known good configuration option which restores the registry from a backup of its last function state. जब हम boot करते हैं कंप्यूटर को तो ब्लैक स्क्रीन आती है DOS. उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, कभी गौर से देखेंगे, उसमें लिखा होगा last known good configuration. अगर आप वो सेलेक्ट करके बूट करेंगे तो आपका जो सिस्टम है
जो लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर रीस्टोर हो जाएगा. So that's what this restoring does. It restores the registry as well. You can also back up the registry files to the system root repair directory by using Windows backup program and overwrite the registry files in system root system32 config. Again, ये जो है मेन जो है फाइल जो कहाँ पे होती है, आप सी में चले जाएं, विंडोज एस क्लिक करें, सिस्टम 32 राइट हियर, C में जाएं, config, let's look for config right here. See, you need permission. So once I click on it, it's gonna take some time to get in. You see ऊपर चल रहा है. Okay, it was fast. But yeah, so this is where you can back up and override the registry files as well. ठीक है, ये उसका path है. This is the path. Okay. Virtual memory. Virtual memory uses a swap file or paging file. ये पेज फाइल तो सिस भी आपको सिस्टम 32 के अंदर ही मिलेगी. व्हाट डज इट डू, करती क्या है? a swap file is actually hard drive space into which idle pieces of programs are placed while other active parts of programs are kept in main memory. Swap file जो है is, think of that as like a compartment of a memory. जब तक वो आइडल होती है, मतलब उसका कोई काम नहीं होता है, वो मेमोरी ये स्वैप फाइल में रखता है. जब उसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से पुल कर देता है. When application needs it, it swaps back to the memory और वो मेमोरी के अंदर चली आती है. जब उसको ज़रूरत नहीं पड़ती वो स्वैप फाइल के अंदर स्टोर कर लेता है. So just think of it as like a compartment, like a waiting room, like a waiting area. Just think of that. Administrative tool. Computer management, MMC, that's one of the um, utility you can say. मैंने अभी खोली थी, खुली भी होगी अभी शायद. ये वाली, this is MMC right here. Okay, here as you can see, डिवाइस मैनेजर आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से. ये देखें सारी डिवाइस मैनेजर मीनिंग कि ये हार्डवेयर, कौन सी किस्म की हार्डवेयर इस सिस्टम पे लगी हुई है. फिर परफॉर्मेंस मॉनिटर आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. देखें परफॉर्मेंस में क्लिक करेंगे, सो इट विल गिव यू द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट सिस्टम. उसका आइडल टाइम, इनपुट टाइम, प्रोसेसर टाइम, एवरीथिंग. ठीक है. टास्क मैनेजर आप यहाँ से, लेट्स सी, task manager is basically this right here. You right click and this is task manager. तो this is task manager, हमने पहले भी देखा था. You can take a look at performance here too for CPU, memory and disk. ठीक है. Next is services. You can access services from here as well. जितनी भी services अभी इसमें चल रही है, you can access that. Remember, this is a central management for all of these. But अगर मैं चाहूँ, I can open up services window separately also. I can just type here services.msc and ये देखें वही सर्विसेज हैं. ये आप मैच कर लें. ये देखें एक्टिव एक्स इंस्टॉलर, एक्टिव एक्स इंस्टॉलर ऊपर भी है ना, तो सेम ही है. बट ये जो कंप्यूटर मैनेजमेंट है, ऑल्सो नोन एज एमएमसी, वो सेंट्रलाइज लोकेशन के अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है. फिर नेक्स्ट है सर्विसेज एंड टास्क स्केड्यूलर. टास्क स्केड्यूलर जो है, if I click on here and you will see कि अलग अलग टास्क स्केड्यूल हुए हुए होंगे. सो लेट्स पिक अप, या दिस इज गुड, ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म. तो इसके अंदर ये जो ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन है ना, ये विंडोज़ के साथ ऑटोमेटिकली आता है. टास्क स्केड्यूलर ये बेसिकली चेक करता है विंडोज़ अपडेट, ये उसका टास्क है. और नॉट अपडेट कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपरली एक्टिवेटेड हुआ है कि नहीं, ये वो चेक करता है. तो एनीवे आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, सो इट शुड ओपन अप दिस. ठीक है. ये क्या है? दिस इज बेसिकली सिंपल a rule which triggers the application. तो नेम आप कुछ भी डाल दें, मर्जी है.
लोकेशन इज द मेन थिंग, ये कहाँ से रन करनी है, पैथ इसका क्या है, ठीक है, कब उसको रन करना है, you put that in there as well. And वो ट्रिगर क्या करता है, every day at 12 AM ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है. This is called task scheduler. जब ये स्टार्ट हो उसका एक्शन क्या हो, करना क्या है इसको, जब भी ये टास्क स्केड्यूलर इस डेट और टाइम को चले तो इट मस्ट स्टार्ट ए प्रोग्राम. कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट करना है इसको, वेल वो प्रोग्राम इज लोकेटेड हियर, system root system32 sc.exe. This is the program, ठीक है, which is the software the scheduler. And then conditions, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, but you can give a condition कि भाई अगर वो AC पावर पे हो तभी चले, या तो स्टॉप कर दो जब वो बैटरी के ऊपर हो, यहाँ लिखा है ना, stop the computer if it switches to battery. You can give it conditions. And then अलग अलग उसकी settings you can do, allow task to run on demand, run task as soon as possible after a scheduled start is missed. इसका मतलब ये 12 बजे का टाइम है, 12 बजे को कंप्यूटर ऑफ है, सुबह के 7 बजे आपने कंप्यूटर खोला तो ये इसका तो टाइम ख़त्म हो गया. तो अगर आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे वो चलना शुरू हो जाएगा. तो ये बहुत सारी चीज़ें आप बेस्ड ऑन योर नीड आप कर सकते हैं इसके अंदर. अगर आप चाहें तो you can create your new task, which you click on here, right click, create a basic task. Again, I'm not gonna go all the way, but test, whatever, right? Next, क्या डेली चले, once a month चले, चले once a month, whatever. कितने मंथ में कौन सी तारीख से स्टार्ट करना है, मैं चाह रहा हूँ 25 फर्स्ट से स्टार्ट हो, 1-10 को बजे, that's fine. कौन कौन से मंथ, आई गेस एवरी मंथ, राइट. कौन से स्पेसिफिक डे, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, चले हो गया. नेक्स्ट, क्या करना है, कोई किस्म का प्रोग्राम स्टार्ट करना है, या तो ईमेल भेजनी है, या कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, उससे स्टार्ट अ प्रोग्राम. कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट करना है, प्रोग्राम पिक करें आप जाके, लेट्स से कमांड प्रॉम्प्ट में कौन सा प्रोग्राम, यू नीड दी एग्जीक्यूटेबल फाइल अदरवाइज इट्स नॉट गोना वर्क. ये मुझे मिली थी, कहाँ गई, कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल ले लें, लेट्स जस्ट टेक दिस, ये कोई KB है, दिस इज फॉर द इंस्टॉलेशन, राइट. Arguments डाल सकते हैं, it's optional, and that's it. And then you finish, and then the task will be created every first of the month. ये task automatically run करना शुरू हो जाएगा. And you can play around with it. इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं based on your need. ये वही है जो इन्होंने बताया, अभी मैं बता रहा था अभी. Task Manager lets you shut down non-responsive applications selectively in all Windows version. To display Task Manager, press Ctrl-Alt-Delete and click the Task Manager button or option. Ctrl-Alt-Delete करने से आपकी वो स्क्रीन लॉक हो जाती है. You can do it that way, or the other way is the one I just showed you. Right click and go to Task Manager, and वो आपको सारी जो applications run कर रही है वो दिखा देगा. इन आप जो आपको turn off करनी हो, you can do it from here. Again, it shows you application, processes, performance, networking, users. Same thing, just showed you processes, performance, applications, users, details, and services. ये सारे सिस्टम में अभी जो काम हो रहा है, this is ongoing stuff जो चल रहा है सिस्टम में, shows you all that. ठीक है. Performance monitor, I just showed you. Task scheduler, I just showed you that as well. msconfig. msconfig जो है is this. All you do is आप start में जाएं, type in msconfig, जो ऊपर आ गया ना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, वो है. जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो खुल जाएगी आपकी. This right here is msconfig. Let me close this. ठीक है ना. इसमें ये जनरल टैब आ गया, जनरल बूट सर्विसेज स्टार्टअप टूल्स, जनरल बूट सर्विसेज स्टार्टअप एंड टूल्स. सो जनरल में क्या है,
स्टार्टअप सिलेक्शन, ये जब आप विंडोज़ आपका बूट होता है ना, जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं, वो यहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेता है कि करना क्या है पहले। तो नॉर्मल स्टार्ट अगर आपको करना है तो इट विल लोड अप ऑल डिवाइसेस एंड ड्राइवर्स एंड सर्विसेज। डायग्नोस्टिक स्टार्ट खाली वो बेसिक ड्राइवर्स है ना वही और सर्विसेज ऑन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरे जो अननेसेसरी एप्लीकेशन वो रन नहीं करेगा। ठीक है। सेलेक्टिव स्टार्ट लोड सिस्टम सर्विसेज ओनली, लोड स्टार्टअप आइटम्स ओनली। ठीक है, अगर उसको अनचेक कर देंगे तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी। बूट सीक्वेंस यहाँ पे खाली एक है, आप चाहें अगर आपके सिस्टम के अंदर आप चाहें तो दो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं, पर उन दो के अंदर से प्रायोरिटी किसको मिले तो वो प्रायोरिटी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी इसमें खाली विंडोज़ 10 लिखा हुआ है ना, मैं अगर समझे मैंने विंडोज़ 7 भी इंस्टॉल किया हुआ है तो विंडोज़ 7 यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा। देन I can choose which one to be a primary booting device, operating system. And then this talks about कितने processor. This is one of the thing. अगर आपके पास old laptop है, and this is a trick, okay? Old laptop है which has उसके पास 2 या 4 कोर हैं और आपने देखा कि लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है, तो आप इधर आ सकते हैं and you see click on number of processors and आप increase कर सकते हैं all the way to the highest processor. तो बेसिकली ये क्या होगा, जब आप बूट करेंगे अपना कंप्यूटर को तो चारों के चार जो प्रोसेसर है ना वो मदद करेंगे उसको बूट करने में, विच मीन्स आपके कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी इससे। ठीक है, दैट्स जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक। ओके, सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज स्टार्ट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ विंडोज़ स्टार्टअप। काफ़ी सर्विसेज हैं। अभी मैं नहीं चाहता कि यार ये इसमें से सेलुलर टाइम ऑन हो, आप इसमें से चाहें तो अननेसेसरी स्टफ बंद कर सकते हैं। देखें, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। ठीक है, तो अब ये जितनी भी है ये सारी अननेसेसरी है। स्प्लैश टॉप, वर्चुअल सिस्टम, अगर मैं ये इसको स्टार्ट ना भी होने दूँ ना फिर भी कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, पर उससे कंप्यूटर बहुत तेज़ चलेगा, मतलब लोड जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट खोलेंगे पीडीएफ का तो शायद ना चले क्योंकि एडोबी नहीं चल रहा है उसके अंदर। सो इट्स लाइक दैट, राइट? Alright, so let's go to the next. Disk management. Disk management मैंने अभी बताया, partitioning is the process of creating logical divisions on a hard drive. Formatting is the process of creating and configuring a file allocation table, which is also called as FAT, and creating the root directory. NTFS available in all Windows is called a master file table, which is also called MFT. Hopefully इसकी विंडो मेरे पास खुली हुई हो। नहीं खुली हुई। Anyway, we can open it, right click and click on manage. ये मैंने आपको पहले बताया था। डिस्क मैनेजमेंट जो है, यहाँ से आप यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस। अगर मैं चाहूँ तो लेट्स से इसको राइट क्लिक करके आई कैन डिलीट द वॉल्यूम। अगर मैंने कर दिया ये तो जितना भी डेटा है सारा रिमूव हो जाएगा इसके ऊपर। आई कैन फॉर्मेट इट फ्रॉम हियर, मैं क्लीन पूरा कर सकता हूँ। वॉल्यूम डिलीट करने में बेसिकली क्या होता है कि ये जो 241.38 दिख रहा है ना यहाँ पे और जो डेटा ड्राइव डी दिख रहा है ये सब रिमूव हो जाएगा। तो जो डी है वो डी नहीं रहेगा, डेटा जो है वो डेटा नहीं रहेगा जब अगर मैं डिलीट वॉल्यूम करूँगा। पर अगर मैं फॉर्मेट करूँगा तो जो डेटा एंड डी ड्राइव है वो इज गोना रिमेन द सेम, बट दी अंदर जो जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। सो इन व्हाट सिनेरियोज डू वी रिमूव और डू वी डिलीट दी वॉल्यूम। तो फॉर इंस्टेंस अगर ये 241 को मुझे पार्टीशन करके दो अलग से निकालने हैं ड्राइव डी एंड ई दो निकालने हैं, सो आई कैन गो हैड एंड डिलीट द वॉल्यूम एंड देन डिलीट करूंगा तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम मुझे अवेलेबल हो जाएगा और मैं उसमें से दो एडिशनल ड्राइव्स निकाल सकता हूँ। आधी 241 GB है तो आई कैन मेक वन लाइक 100 GB, द अदर वन 141 GB ऐसे। ये अलग अलग तरीके के फाइल सिस्टम्स है। फर्स्ट वन जो है is FAT, file allocation system, uses the 8.3 naming convention, 8 letters for the name, a period, and then 3-letter file identifier, aka FAT16.
सो जो फैट 16 है, वो जो पहले जो फैट आया था कंप्रेशन, ये उसकी बात कर रहा है. Then आया virtual FAT introduced with Windows 95, augmented the 8.3 file naming convention and allowed file names with up to 255 characters. It created two names for each file, a long name and an 8.3 compatible name so that the older programs could still access files. 95 से शुरू हो गया था कि 95 की बात करें, यस. उनके कैरेक्टर्स जो हैं, नेमिंग कन्वेंशन के कैरेक्टर्स 205 इंक्रीज हो गए थे. बट 95 इमीडिएटली सारे लोग मूव नहीं हुए थे 95 में. तो जो पुराने सिस्टम थे उसको भी, पुराने सिस्टम्स की एप्लीकेशंस भी 95 में रन करने के लिए उन्होंने बैकवर्ड कंपैटिबल बनाया था उसको. तो ओल्ड नेमिंग कन्वेंशन भी ये 95 के ऊपर चलते थे. ऑल्सो 16 बिट and 2 GB max partition size were available. उससे पहले ये जो फैट 16 है उसके अंदर आप 2 GB से ज़्यादा के पार्टीशन नहीं बना सकते हैं. अब ये यूज़ नहीं होते हैं. अब तो मिनिमम हार्ड ड्राइव आपकी 100, 200 या 1 टेराबाइट की आती है. फैट 32 जो है, Win95 release 2 was based more on virtual FAT, VFAT 32, than on FAT16, allows 32-bit clustering with a 2 terabyte maximum partition size. तो FAT32 जब आया, 32-bit की clustering size थी instead of 16-bit. तो उसके अंदर the maximum partition size they allowed was 2 terabyte. FAT32 में. अब आ गया है दूसरा NTFS, which is called New Technology File System. This came out in Windows NT, Windows 2000 and above. Includes individual file security, compression and RAID. ये 3 फीचर्स थे उसमें नहीं थे पहले, अब ये इस वाले में आ गए. कंप्रेस कर सकते हैं आप हार्ड ड्राइव को, जैसे मैंने पहले बताया कंप्रेशन से क्या होता है, और RAID भी क्रिएट कर सकते हैं, रिडंडेंसी. फिर आया CDFS, which is called CD-ROM file system. While not a file system that can be used on a hard drive, CDFS is the file system of choice for CD media, and it has been used with 32-bit Windows versions since Windows 95. CDFS file system is basically वो CDs आप समझ लें जिसके ऊपर वो Windows हम boot करते हैं. 32-bit के at that time, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, at that time 32-bit के जो Windows थे, you were able to boot it directly from these CD-ROM file system, CDFS files. फिर आए थे ExFAT, which is also called Extended File Allocation Table, proprietary file system of choice for flash drives where NTFS cannot be used because of overhead, and FAT32 is not acceptable due to file system limitation. So then they came up with ExFAT or ExFAT. तो जो फ्लैश ड्राइव होती है ना अपनी छोटी फ्लैश ड्राइव्स, उसके अंदर ये ExFAT उस टाइम में यूज़ करते थे, because NTFS was not possible to use on that. फिर आई NFS, which is called Network File System. This is mainly used in Unix and Linux environments. Also, Windows 7 runs Windows services for Unix. तो Windows 7 जो है वो भी रन करती है Windows services Unix के अंदर ही. फिर आया EXT, which is Extended File System. This is different than ExFAT, okay? EXT is Extended File System, not supported in Windows in Windows. EXT3 default file system for many distribution of Linux due to its generaling capabilities, that is tracking changes and using it to repair inconsistencies that result from, for example, improper shutdown. EXT4 जो है basically आप Android है ना, उसके अंदर EXT4 यूज़ होता है. ये Unix and Linux सिस्टम के अंदर यूज़ होता है, ठीक है. Windows के अंदर यूज़ नहीं होता. Windows के अंदर NTFS is mainly used. So disk management, ये डिस्क मैनेजमेंट वही है अगेन जो मैं ये बता रहा था आपको.
इसके अंदर they're talking about drive status, mounting, initialization, initializing, extending partition, all that. So all of this, um, the only thing is I do not have any extra drives to do that, but how you do it, that again I can format it, I can delete it. अगर मेरे पास for example अभी सारे use हो गए हैं, जो blue दिख रहे हैं ना आपको, which means they're all being used. अगर वो use ना हो रहे हो ना, तो ऊपर आपको gray and black दिखेंगे, तो and you will say that it's not being used. It will say unmounted. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है mounting, unmounting. So वो unmounted लिखा हुआ होगा, so then you can mount it. So basically जैसे 14 GB है, अगर let's say मेरे पास 14 GB available होता, I would just right click on it and I would get this option. I would not get this option. I would get this option. And then from here I can either go to properties. Actually यहाँ पे ऊपर एक दूसरा भी ऑप्शन आता है, उसमें लिखा होगा new. ये नहीं आ रहा है because I cannot create new, but ऊपर नया ऑप्शन आता है, उसमें लिखा होता new. If I would click that, then फिर वो मुझसे पूछता कि भाई कितने जीबी का पार्टीशन बनाना है आपको. Then you would just enter that number or enter whatever is available. Full amount भी आप डाल सकते हो, and it would create that partition. So the disk management is what they're talking about here, splitting partition, shrinking. ये सब आप उस management tool के through कर सकते हैं. System utilities. अरे देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना कि registry नहीं है, it's reg edit. Sometimes you forget. Registry नहीं है, जो registry में जाना हो ना, it's this reg edit जो इन्होंने यहाँ पे बताया ना. This is what opens up that registry window. देखा, तो it's reg edit actually. Sometimes you forget. Command, uh, system utility command from services MSC मैंने बताया था, ये services की window खोलता है. I don't have it open right now. I guess we can quickly go and do it. Services.msc will open up services windows right here. ठीक है, जितनी भी services run कर रही है. Then MMC तो यही खोलेगा, ये रहा. ठीक है ना, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम. सही है. MSTSC क्या है? It is an RDP or remote desktop protocol. MSTSC आप रन में टाइप करें, एंटर करेंगे, and you will get this window. That's what MSTSC. मैंने पहले बताया था, ये रिमोटली किसी और कंप्यूटर के आप ऊपर आपको जंप करना हो, you can do it from here. So if I want to go, I just click enter. It's asking for password. I'm gonna and देखिए it's going into the server. ये दूसरे सर्वर के अंदर एंटर हो गया. ठीक है ना, we're not gonna go much into that, but yeah, that's what that is. Explorer मैंने बताया था आपको, जो Windows Explorer है, that's what it's talking about. MS Info 32 ये हम पहले भी रन कर चुके हैं, but let's do that again. MS Info and right here System Information. आपको पूरे सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता है. हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या क्या है चल रहा अंदर, DMA and things like that. Hardly you will use any of this information, but the summary sometimes is gonna be really handy. बता देता है कि टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी है, कितनी अवेलेबल है, इंस्टॉल कितनी की हुई है. Right here it tells you the manufacturer, the version of your operating system. Remember Windows 10 चल रहा है, but 19 इसका जो बिल्ड है 19043 का है. अभी जो वर्जन आ गया, आई थिंक 21H1 आ गया है. तो this is the version. This is what they mean by version. हमने ऊपर ही कवर किया था कि what is the version. So you get quite a bit of the information over here as well. Next है DXDiag. ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, but I will show you. ये DirectX के लिए होता है. ये रहा. You'll get this. Do you want to check if your drivers are digitally signed? To check your drives, Windows.
I'm not gonna do that because sometimes it takes a little bit time, but let's see if it opens up just without it. There we go. तो ये है DirectX diagnostic tool, which is DX DirectX diagnostic tool. That's what it means. यहाँ पे जो आपके जो कंप्यूटर की डायरेक्ट एक्स की सेटिंग्स है ना, ये जो डायरेक्ट एक्स है बेसिकली आपके कंप्यूटर की जो 3D VGA की सेटिंग्स होती हैं and things like that are handled from here, from this um, diagnostic box, you can say. But anyway, this shows you what type of BIOS you have, what type of memory, what type of processor you have. डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता है. सो अप्रॉक्सीमेटली डिस्प्ले के अंदर ये मदरबोर्ड जो है डिस्प्ले को कितनी मेमोरी दे रहा है. सी डिस्प्ले मेमोरी ले रहा है अबाउट 128. उसको टोटल अवेलेबल है 4 GB विच इज़ 4175 MB. अभी वो करंटली यूज़ कर रहा है 128 फॉर द डिस्प्ले वर्चुअल मेमोरी. एंड शेयर्ड मेमोरी इज़ दी बेसिकली अमंग द रेस्ट ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये शेयर हो रही है. आपको करंट मोड के ये भी दे देता है रेजोल्यूशंस. एंड यहाँ पे इसको ये भी बताना चाहिए, हाँ, जो नेम जो है ना ये इंटेल HD ग्राफिक्स shows you कि ये जो कार्ड है इस मशीन का है, because we have 2 screens, that's why it's showing display 2, but the display 2 should be showing for the other screen. हाँ, so even though the name is coming up, actually no, the name is, yeah, name is the same, it should not be the same either way. But देखिए आप जो display mode है ये अलग है. ये इसलिए अलग है because this is a second screen under a different resolution, so that's what it's showing. आप you can always identify with these details. फिर sound, इसमें जो अलग अलग साउंड्स के कार्ड्स लगे हुए हैं, माइक्रोफोन, स्पीकर, whatever, अलग से जो है प्लेंट्रॉनिक्स का ये अलग से हेडसेट लगा हुआ है, उसके बारे में शो कर रहा है. ये जो बिल्ट इन है कार्ड उसके बारे में शो कर रहा है. और ये दूसरी जो स्क्रीन है उसके अंदर भी साउंड है, जो प्रोजेक्टर है उसके अंदर भी साउंड है, ये उसका भी शो कर रहा है. सो इट गिव्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन इन DirectX डायग्नोस्टिक टूल. तो MS Info ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया. DirectX MSTSC ये भी बता दिया. ये फर्दर इन्होंने बताया है if you want to have additional commands in it, but MSTSC, just remember that that's RDP. Okay, power management. Hibernate saves all the contents of memory to the hard drive, preserves all data and applications exactly where they are, and allows the computer to completely power off. ये power management में 3 options है. Hibernate, standby, suspend, sleep. Standby जो है it leaves memory active but saves everything else to disk. Suspend and sleep में क्या होता है? Sleep puts the system in a low power state while hibernate turns it off. तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं. आप अमूमन पता ही होता है लोगों को ये स्लीप, जब जैसे अगर लैपटॉप होता है आप लैपटॉप की स्क्रीन बंद करेंगे कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा, पर उसकी भी सेटिंग्स होती है. ये देखें यहाँ पे स्लीप की है. we're not gonna do that, but if you sleep, you see it says the PC stays on but uses low power. Apps stay open so when the PC wakes up, you are instantly back to where you left off. तो स्लीप का ऑप्शन ये है, जैसे आप स्लीप करेंगे वो कंप्यूटर बहुत लो पावर पे चला जाता है, पर जो एप्स जो है वो ओपन रहती है. तो जैसे आप लैपटॉप को वापस खोलें या कंप्यूटर का माउस हिलाएं तो वो उसी जगह से स्टार्ट हो जाता है क्विकली, और क्योंकि वो लो पावर यूज़ करता है. पर जो हाइबरनेट जो है वो सब मेमोरी के कंटेंट्स ऑफ मेमोरी टू हार्ड ड्राइव के ऊपर सेव कर लेता है, सारा डेटा प्रिजर्व कर देता है, पर वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है, वो हाइबरनेट होता है. कंप्यूटर ऑफ हो जाता है पर जितना भी आपका जो ओपन डेटा है ना वो हार्ड ड्राइव के ऊपर कॉपी कर लेता है. पर जो स्टैंड बाय है ना वो डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर टेम्पोररी रखता है, पर कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता है. वो आपका कंप्यूटर ब्लिंक करता रहेगा, वो कंप्यूटर आपका शटडाउन नहीं होता है स्टैंड बाय के अंदर इज completely.
Wake on LAN. Wake on LAN is an Ethernet standard implemented via a card that allows a sleeping machine to awaken when it receives a wake up signal. वेक ऑन लैन जो है ना अमूमन जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं उसके अंदर ये ऑप्शन होता है. टू वेज टू डू दिस. वन, आप लेट्स से आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में है, तो ये वेक ऑन लैन जो है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है. लेट मी सी इफ आई कैन शो यू. Let's see. ये है वेक ऑन लैन एंड शट डाउन लिंक स्पीड, वेक ऑन मैजिक. होल्ड ऑन, वेक ऑन लैन कहाँ है? Yeah, right here. Allows this device to wake the computer. ये है वो wake on LAN ऑप्शन. अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ और ये कंप्यूटर को स्लीप मोड में मैं डालता हूँ, मैं अगर रिमोटली, अगर आई हैव दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मैं रिमोटली अगर उसको वेक करना चाहूँगा, ये नेटवर्क कार्ड उस कंप्यूटर को ऑन कर देगा. तो ये उसका फंक्शन यहाँ पे है, वेक ऑन LAN. इट कम्स हैंडी व्हेन यू आर डूइंग रिमोट मैनेजमेंट. ठीक है. So this is where our chapter 14 ends. If you guys have any questions or comments, feel free to put that in the comment or the chat section below. Make sure to like and subscribe the video and hit that bell notification icon so any future videos I upload, you will be notified for those videos.